Okay, so we will start. We have half of the classes over here, and rest of them will join soon. Okay. So first of all, if you have not created your Canvas account, that in every lab I have given the instruction that to create a Canvas account. I have shared the link also to every people during the laboratory session. Still, if you have not joined the Canvas account, so I request that everyone from this class make sure before the next week you should create your Canvas account from the joining code. So somebody please share the joining code that I have given previously, if it is have right now. Some, is there anyone having the joining code of our previous kind of the lab? Or let me share it to you. Give me a minute. Okay, so you can join with this code also, as well as in entire class of all the 83 students. I have sent you the invitation of course joining. Okay, so once you accept those course joining, then also you can enroll for the course. So I have sent you the link of the entire class. I have sent this link to entire class for the joining information. So please use your Marwari University ID, and then please join that course. So the assignments and all stuff is going to be uploaded over there. जो भी assignment होंगे, जो भी सब चीजें होगी, जो भी हम बात करेंगे, सबमिशन होगा, वो सब कैनवास में से ही होगा. तो पूरे क्लास को मैंने एक लिंक भेजा है. You need to accept that link, and according to that your canvas going to be set up. और जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जो भी असाइनमेंट होगा, जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे, सब वहीं पे अपलोड हो गए. आपको वहीं पे उसका आंसर भी देना है. सो एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन विद दैट लिंक. डोंट फॉरगेट टू डू दैट. अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए लास्ट में 5 लैब के बाद कोई बंदा मेरे को बताए सर मेरा कैनवास सेटअप भी नहीं हुआ है. सो आई विल चेक योर अटेंडेंस फर्स्ट कि भाई आप 5 लैब से थे या नहीं थे. if you are there then I'm not going to create your canvas setup. Okay, so मैंने ऑलरेडी सबको लिंक भेजा है. अगर नहीं मिला है, आप अपने पर्सनल आईडी में मत देखिएगा, मारवाड़ी आईडी ओपन करिए. मारवाड़ी education.edu.in वाला आईडी आप ओपन करिए. वहां पे ऑलरेडी एक कैनवास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर करके एक सब्जेक्ट का एक्सेप्टेंस के लिए लिंक भेजा होगा. कैनवास फ्री फॉर टीचर में से आपको वो एक्सेप्ट करना है. Once you accept that, then you are enrolled in that course. So please do that as soon as possible. अगर नहीं हुआ है तो कर लीजिए, हो गया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है. But you need to do that task as a first priority. Just give me a second. Yeah, so in the last lecture, I have asked you the question. So what I required, like everybody need to just give the answer of that particular question. Everyone, please type your answer in that chat box that what you have found on that particular question. Everyone, please.
कि भाई रैम है और रोम है, उन दोनों में किस तरह से जो भी डेटा है वो स्टोर होता है। Yes, anybody want to give the answer? Who have found the answer of this question? First of all, tell me. Please open your mic and tell me the answer. भाई आपने find out किया है या नहीं? Please. Yes, Am I sir. Hello, audible? sir. हाँ, कौन? Hello. Vipul. Can you? Hello, sir. हाँ Vipul, बोलिए. sir. हाँ Yes, बोलिए. sir. Flip-flop stores a 1 bit data. That is 1 for set and 0 for reset. Okay. And uh, in flip-flop, sir, we add in RAM. Sorry, sir. In RAM, there be thousands of registers are available. Okay. Thousands of registers are available, and we select the register we want to reference by address line, then Okay. write the data to it, or Okay. Okay. read data from it. Mm-hmm. Yes, sir. True, Vipul. Yes, correct. So you are having hundreds or thousands of registers are there, and each register is made up from the flip-flop, because flip-flop is a 1 bit storage device. And by doing the addressing, like you want to give the address that at which particular location, आपको कौन से लोकेशन पे अपना डेटा स्टोर करना है, वो आपको अपने प्रोसेसर से पहले एड्रेस बार को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और बाद में जो एड्रेस आप सिलेक्ट कर रहे हो वहां पे जाके वो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा. ठीक है, such type of the process is there, but data stored in register, and register made up of the flip-flop, and flip-flop because it's a 1 bit storage. What about the ROM? What about the ROM? Like मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ, बिफोर यू गिविंग द आंसर जस्ट लिसन टू मी फर्स्ट. अगर मैं ऐसा कहता हूं कि फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोरेज डिवाइस है कि जो रजिस्टर में यूज हो रहे हैं, और वो रजिस्टर आप एज अ मेमोरी स्टोरेज की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप अपना पावर सप्लाई बंद कर दो, अगर आपके पास कोई फ्लिप फ्लॉप है, कोई रजिस्टर है, अगर आप उसका पावर सप्लाई ऑफ कर देते हो, अगर आप वो डिवाइस को पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हो, तो फिर से क्या वो उसी स्टोरेज पोजीशन से अपना डेटा चालू करेगा या वो रीसेट हो जाएगा? Sir, it start from where it's and it in a flash memory RAM is available in, sir. So flash memory is used for the ROM. Are you saying like that, Vipul? No, sir. Flash RAM is used, sir. Flash RAM. Okay, flash RAM is used. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि RAM है, जो हमारे पास RAM होती है, which is made up from the flip flop and register, but RAM is volatile, ROM is non-volatile. Yes, sir. Jai, can you open your mic and kind of tell me the difference, that what do you mean by volatile and non-volatile, Jai? Yes, sir. Huh. Sir, when we turn off the PC, the data doesn't wiped out. Okay. It's non-volatile. Okay. So that's the difference. Like when you just shut down the PC, data is going to be wiped. So that's going to be a non-volatile. And likewise, the difference you can say depend upon the power supply that you have given. तो अगर हम अपना पावर सप्लाई बंद कर देते हैं, तो मेमोरी जो होता है वो स्टोर होगा, वो वाइप हो जाएगा रैम में. तो फिर ये 1 TB में हम जो अपना मूवी वो सब स्टोर कर रहे हैं, वो कैसे वहां पे परमानेंटली स्टोर रहता है? दैट इज अ आंसर दैट आई रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस क्लास. जो आप 1 TB 1 GB का जो भी सॉन्ग, मूवी, पिक्चर जो भी आप अपने लैपटॉप में स्टोर करके रख रहे हो, वो किस तरह से स्टोर होगा? क्योंकि एक बार आपने पावर शट डाउन कर दिया तो वो सब निकल नहीं जाना चाहिए, अगर वो फ्लिप फ्लॉप से ही सब रजिस्टर में सब स्टोर हुआ है तो. Is everyone is getting my question or not? First of all, yes or no? No, sir. Repeat, sir. Yes, sir. Repeat. आपने ऐसा बोला कि अगर फ्लिप फ्लॉप एज अ रजिस्टर
फ्लिप फ्लॉप जो रजिस्टर में यूज होते हैं, रजिस्टर एज अ मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। लेकिन हमारे पास ये चीज ऐसी भी है कि अगर आप अपना पावर सप्लाई ऑफ कर देते हो तो वो सब डेटा चला जाता है, ठीक है। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेट। तो जो आप मूवी वो सब चीजें आप अपने एचडीडी में स्टोर कर रहे हो, जो अपनी हार्ड ड्राइव में स्टोर कर रहे हो, तो वो कैसे होता होगा, क्योंकि वो तो डेटा नहीं चला जाता। इट्स गोइंग टू बी सेम एज इट इज। व्हाट इज द आंसर फॉर समबडी हैज राइज्ड देयर? यस समीर, समीर जोशी। Sir, it's stored by a magnetic disk. Yeah, true. So Samir has said it truly, it's stored by a magnetic disk, like it's one of the advancement version of your rewritable DVD. तो आप रीराइटेबल डीवीडी में किस तरह से अपना डेटा रीड और राइट कर सकते हो, सिमिलर टाइप ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क और दैट मैग्नेटिक डिस्क बेस्ड recording are there in your HDD. So HDD is made up from such type of the disk. वो स्टोर करने के लिए उसका नीडल होता है, और वो जो भी डेटा एड्रेस आप दे रहे हो उस हिसाब से वो रोटेटिंग डिस्क में, ड्राइव में वो सब चीजें स्टोर होती है। लेट मी शो यू दैट किस तरह, अगर आपने इंटरनल स्ट्रक्चर कभी एचडीडी का देखा है, सो यू कैन से दिस टाइप ऑफ द एचडीडी विल लुक लाइक। यू विल सी दैट दिस इज अ लुक ऑफ द एचडीडी। सो ये जो डिस्क है पूरा व्हाइट कलर का, दैट इज एक्चुअली योर स्टोरेज एरिया। और ये जो नीडल है, दैट नीडल इज जस्ट मूविंग फ्रॉम वेरी सेंटर टू दी दैट एंड पार्ट, एंड वो जो रोटेट होता है उसी रोटेशन के साथ वो अपना जो ये जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो, जो जीबी में, जो मूवी फोटोज जो भी है, वो ये डिस्क में स्टोर होता है, एंड इट्स अ रीराइटेबल। सो आप मल्टीपल टाइम उसको रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, सच टाइप ऑफ दी फैसिलिटीज देयर। तो कौन से लोकेशन पे क्या स्टोर करना है, अकॉर्डिंग टू दैट कमांड इज गिवन फ्रॉम द प्रोसेसर। सो ये नीडल उसका मूवमेंट करता है और वो डेटा है यहाँ पे स्टोर होता है। डिपेंड अपॉन दी जीबी, लाइक अगर आपके पास लेट्स टेक 500 जीबी, 1 टीबी, 2 टीबी, 4 टीबी, 8 टीबी, अलग अलग टाइप का अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, likewise that number of disk is going to be increased. If there is a 4 TB hard disk, 4 TB hard disk, so that number of disk is going to be 4 or 8. Likewise that number of disk is going to be increase. Okay, so हर एक डिस्क का कैपेसिटी होता है, अगर उससे बड़ा आप हार्ड डिस्क लेते हो तो उसका साइज भी बढ़ता है इन टर्म्स ऑफ वर्टिकली। तो आप देखोगे अगर आपके पास 500 जीबी या 1 टीबी का हार्ड डिस्क है तो वो पतला होता है, स्लिम, बट 4 टीबी इट्स very thick size because the number of disks are more over there. Okay, इससे अच्छा, or we can say there are a fast stuff, or we can say which can do the stuff storage in another manner, which is going to be a SSD. So you can say SSD, which is a solid state drive, which is going to be store the data permanently by using such type of the EEPROM, like you can say, okay, electrically erasable programmable read-only memory. So we can say such type of the technology which is used to do the read-write of the memory, to do the read-write of the particular stuff in this type of the device. So it's a one type of the flash memory, and there is a secondary storage also there, as well as we can say it will also store the data. Okay, even after your power is going to be off, still the data is going to be stored through the flash, this type of the flash memory. और ये rotation based नहीं है, which is this is just directly to load the data. उसमें ऐसा कुछ rotating mechanism, ऐसा needle ऐसा नहीं है, so it is work faster than HDD. That's why SSD है, वो technology भी थोड़ी like कह सकते हैं महंगी है, as well as it will also give you the fast response. आप सबको पता है कि अभी 7,000 रुपए की 500 GB की SSD आ रही है, और वही 7,000 रुपीज में आपको 4 TB का HDD मिल रहा है, but depend upon your applications, their variant is going to be differ. Okay, so this is actually the stuff, or we can say there is a concept related to the memory storage in SSD and HDD. ठीक है, so धीरे धीरे हम सब ये चीज जब हमारा memory interfacing और वो सब चीज आएगा तब हम पता करेंगे, but you need to just keep in mind कि भाई होता क्या है एक्चुअली, SSD है क्यों महंगी है, HSD है why there are that much of the lower price. आप बिलीव नहीं करोगे, like it's only a 4 GB or 8 GB of the pen drive which came around 800 rupees. 8 GB का pen drive 800 रुपए का आता था. Okay, I'm talking about this stuff at 2009 में, आज से 11 साल पहले, when I am in UG
4 GB या 8 GB का पेन ड्राइव आप लेने जाओ 800 या 1000 रुपए का आता था, अभी 1000 रुपए में 256 GB का that SD card is coming over there, और इतने पैसे में 64 GB 128 GB का पेन ड्राइव भी मिलता है by the SanDisk and other company also. So as the time going to progress, that price of that storage is going to be reduced. Okay, so these are the all stuff, and if you just, I am going to give you the some of the information, like आप नहीं बिलीव करोगे, जो हम ये i7 i5 प्रोसेसर जो भी हम ले रहे हैं, उसका स्टार्टिंग से एंडिंग मैन्युफैक्चरिंग, वो चिप, अगर पूरा प्लांट का सेटअप देखो, जितने पैसे में वो पूरी चिप बनती है, उसका आउटपुट मटेरियल से लेके एंड टू एंड उसका कॉस्ट नियर अबाउट 1000 और 2000 रुपीज ओनली. लेकिन वो i7 का चिप आपको 25,000, 30,000, 35,000 रुपए में आपको बेचेगा, 20,000, 15,000. सो 2000 की चिप वो 15,000 में बेच रहे. क्यों? बिकॉज टू डिजाइन दैट चिप, टू डिजाइन दैट i7 चिप, उन लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर दे हैव इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. उसको डिजाइन करने का टास्क, जो हम बेंगलोर, हैदराबाद, जो हम आईटी हब बोल रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग, जो हम बात सुन रहे, लाइक देयर आर नेम इज आउटसोर्सिंग. सो सेम थिंग इज गोइंग टू बी डन फ्रॉम इंटेल एंड मेनी जायंट कंपनी, जो उसका ये डिजाइन, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, ये जो चिप है, जो वो प्रोसेसर बना रहे, कंट्रोल बना रहे, दैट द टेस्टिंग एंड ऑल स्टफ दैट वी आर डूइंग इन आवर इंडिया. वो डिजाइन करते हैं हम यहाँ पे, उसको टेस्टिंग करके, उसका जो फीडबैक, जो उसका टेस्ट बेंच, उसको रन करके, उसका जो परफॉर्मेंस है वो सब सेट करके हम उसको फीडबैक देते हैं. और दे आर पेइंग डॉलर्स, ओके, millions of dollars to us to check whether it is right or wrong likewise. So initially they have given a billions of dollars to design that single chip. That's why output cost is a very tiny, 3 to 4 or maximum 10 to $15, but they are selling in $200, $300, 20 to 30 times higher. और आपको ये बात जान के भी अच्छा लगेगा, like initially when it's initially launched any processor, जो अभी आप i7 प्रोसेसर के लैपटॉप 6 जनरेशन i7 प्रोसेसर के लैपटॉप अभी 55 और 60,000 में भी मिलेंगे. When I have purchased my laptop with this i7 6 generation, it will cost around 1,10,000. So it's right now it's a half of the price, आधा हो गया है सब इसका प्राइस, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम का. क्योंकि as that market is grow, जैसे जैसे ये सब चीजें बिकती जाती है, they will cover their overall cost and then they will reduce the cost of that processor so they can beat a market more and more. तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंच सके. Such type of the kind of the environment is there when they are selling the processor also. So there is a out of the track talk, but I hope that you have like about this stuff, like ये ऐसे होता है और इस तरह की सब चीजें. Do you want to add anything in this one? Like if you have such type of the experience, if you have had read some of the blog related to the hardware, because ED1 class में एक हमारा पूरा class ये discussion में ही गया था, like it's a comparative study of Intel and I can say that that's another NVIDIA. Okay, so that's NVIDIA and Intel. They are having kind of the comparison. Like ये क्यों अच्छा है, ये क्यों नहीं है, कौन सा मार्केट में क्या. If you have read some blog, if you have done, if you have some information, you can share it right now. AMD, sorry, not NVIDIA, it's AMD. AMD and all stuff. There, yes. Anyone want to share? That portal is open for discussion. If you want to share some information, if you have related to processor, that performance parameter and all this stuff. Ryzen, yes. So as a computer and IT engineer, you must require the knowledge of hardware also, like what are the hardware is available and what are the stuff is there and which is a better and which is a suitable. Can anybody tell me about this stuff? What do you mean by cache memory? If someone are very interested in hardware, they have come across this particular stuff, cache memory. Someone from this class, please. Frequently requested data. Yes, please.
Who has opened their mic? Yes, Samir. Hello, hello, sir. Yes. Hello, sir. Yes, Samir. Or sorry. Vipul, sir. Yes, Vipul. Tell us. Sir, cache memory is store temporary files, sir. Okay, temporary file storage. Samir, what do you want to say on the cache memories? Samir. Sir, cache memory is a buffer for a CPU, is fastly loaded files or whatever data for a CPU. Okay, so cache memory is, we can say it's work as a buffer memory. Do you know what is a maximum cache memory available in recently in any of the high performance system? Yes, Nirzar Miatra. Sir, Yes, tell me. સર કેશ મેમરી મતલબ આપણે કોઈ પણ સોફ્ટવેર કે એપ્લિકેશન ખોલી છે Mhm. તો તેના માટે સર જે પ્રોસેસ થાય છે ને તે બધી શરૂઆતમાં જે પ્રોસેસ કેશ મેમરીમાં એકવાર સ્ટોર થઈ જાય છે એટલે બીજી વાર જ્યારે આપણે તેને ઓપન કરીને તો Okay. વાર ન લાગે એટલી બધી. Okay. So let me show you some of the stuff. Like there is a website name is arc.intel.com. ये वेबसाइट है जिसमें जाके आप जो भी लेटेस्ट उसका प्रोसेसर है आप उसका इंफॉर्मेशन इधर से ले सकते हो कि भाई कब लॉन्च हुआ क्या चीज है. You can see there are a latest processor that they have launched which is a Xeon W3275M processor launched in a Q2 of 19. And you can say it is a 28 cores. Your i7 processor, it's having approximately, it's having kind of the 7 cores and such type of the stuff is there. Okay, so this is having a 28 core as well as what is a cache memory. Like in our high performance system, I can say in most of the Alienware processor, the Alienware device, which specially used for gaming and rendering, they are having a maximum 12 MB of cache memory. So 12 MB of cache memory type of the Alienware laptop cost you around 2 lakh and 2,50,000. But in this processor, that cache memory is a 38 MB, which is the highest one, as well as more than this cache memory also available in some of the AMD processor also. So this is a very high performance system which actually use when you are talking about the supercomputer or when you are talking about some cloud device. Like you can imagine like that device available in Google, Microsoft or any such Facebook, their servers are having actually such type of the high performance processor are there, which is having a very high frequency or having kind of the very high capacity of this. You can attach near about 100 TB of hard disk, near about 100 TB of the hard disk with this type of the processor, as well as you can connect something 64 GB of the graphics card, 64 GB of the graphics card with such type. I'm talking about graphics card, not the memory. 1 TB of the RAM, you can include 1 TB of RAM, 64 GB of graphics. Guys, not it's 1 GB, it's a 1 TB of RAM. That much of the RAM you can include. Right now, the system which is available in our campus that I have, that's 64 or 128 GB of the RAM system is there. So that much of this high processing stuff that you can see. So that's available. Like just periodically see this website. Like what is the meaning of that? What is the inside of that Xeon processor? What is its actually cost? That processor chip, only that processor chip will cost you around $7,000. Okay, so it's a 3,50,000, near about 4 lakh rupees of the only processor chip price is there. So this entire system will made up near about 10 to 12 lakh rupees only. So this is the overall kind of the high-end system right now available. Similar type of this stuff is you can also find out in AMD also. Okay, so this is all about this stuff. This is just a discussion like how you can kind of find out a better information on the processor and all stuff. Okay, yes, so let me start with the stuff that we need to discuss over here. So yes, we have discussed in this entire lecture that what is a sequential circuit, what is a combinatorial circuit. We have done the difference between them, as well as if we can go with the kind of the topic which is named as a number system and code. So you can say there are various number system we have. So as per from your hand movement, you can say there are a base 10 system is there because we have a 10 fingers. Okay, so it's starting from 1 to 10. We are saying that there are a 10 number of the system is there, but actually the digit is from 0 to 9. Okay,
As well as there are computer numbers. Whenever we talk about the computers, it's either going from 1 and 0 only. So it's having a 0 1 0 1 type of the thing. So that's the number system used in the computer. Can anybody tell me, like, this is kind of the off the record question, and that's just for general knowledge also. Can anybody tell me why this 2 is written as that 2? Like, I can say, if I'll just go with the notepad, not notepad, but I can say paint. Why we can say the 2 will be written like these only? Why it is not like something like these only? Or why 3 will be look like these only? What is the reason behind that? Why you have chosen that 4 will be look like this one only? Any answer to that? हम लिखते हैं, हम बचपन से हम LKG में, HKG में, primary education 1 2 3 4 we have started writing this. Does anybody having question in their mind? भाई ये 2 इस तरह से क्यों लिखते हैं? 1 इस तरह से क्यों लिखते हैं? That's the trick question we have. Sir, because we learn like that, sir. No, मैं यही कर रहा हूँ, आपको सिखाया गया ना भाई एक ऐसे लिखो, 2 पर 2 ऐसे ही क्यों लिखो? उसके पीछे का कुछ तो साइन। आप सोचिए कि आज से 300-400 साल पहले क्या सब लोग 2 उस तरह से ही लिखते होंगे? Why now that's once that number system has been evolved? It's very deep thinking. It's not deep thinking, I can say. There are a reason behind that particular stuff, which is considered as like इस तरह से ये नंबर का इवोल्यूशन, ये 1 2 3 इस तरह से हुआ, डिपेंड अपॉन दैट corners or depend upon that angles created. So when you are writing a 2, so whenever there is a first lipi has been started to writing 1 2 9 and all the things, at that time जब वो लोग 1 लिखते थे तो 1 में एक ही एंगल आता था. When you are writing a 1, so one slant line, then there is a straight line, so only one angle is there. When they are writing a 2, so there are a 2 corners there. One is above, one is down. That's why there is a 2. Likewise, it is in 3 also. So depend upon that how many numbers of angles are there in a number. They are saying that 1 will be like this one, 2 will be like this one, 3 will be like this one. Likewise, they have evolved and then they have fixed the number. Like now we are going to set this number like this one. So number system हम discuss कर रहे हैं तो इसलिए कि पहले सब लोगों के पास 1 से 9 नंबर ही थे, 1 to 9 नंबर. Why that India has been famous? आपने बहुत जगह पे भाई 0 का इन्वेंशन इंडिया ने किया, 0 का इन्वेंशन इंडिया ने किया. But why this is a big kind of the achievement by the Aryabhatta? Because that's initially that 0 is useful in Indian territory. But at that time, one of the person from the Arab side the country, one people, एक बंदा था जो घूम के चाइना और घूम के इंडिया में आया. उसको ये 0 के बारे में पता चला कि like if you add this number, so all the calculation going to be very easily. From that particular time वो बंदा यहीं पे रुक गया और उसने पूरा अपना लिखा, पूरा एक बुक और थीसिस, बहुत बड़ा थीसिस था भाई 0 को यूज करो तो ये नंबर, ये जो मैथमेटिक्स है, ये सब चीजें ऐसे इवॉल्व हो सकते हैं. Then 0 is going to be famous in everywhere and people are using for the calculation and all stuff. Because उससे पहले 1 to 0 तो लिखा, 1 to 9 तो लिखा, लेकिन 0 क्या है? That's people are don't know. And before the 0 is having kind of the Hindu mythological, philosophical, kind of the meaning is there. 0, we can say there is a void. Okay, they are considering with related to the I can say that's related to the Vishnu. Okay, so they are considered like in Gujarati में बोलते हैं नाभि, या हिंदी में भी उसको नाभि बोलते हैं. Like it's considered as kind of the nabi of Vishnu. Like everything can be adjusted in that, or everything can be created from that, and it's undestructible. That's the overall meaning of 0. Like 0 है, उसके अंदर सब चीजें समा जाती है, उसमें से सब चीजें उत्पन्न भी होती है, but उसको कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता. That's the why reason 0 divided by 1, it's going to be infinite. And 0 divided by 1, which is a 0, and 1 divided by 0, which is a infinite. क्योंकि आप 0 को divide नहीं कर सकते हो, और 0 के साथ कुछ भी divide करो, so it's just take the ownership and it's become the 0. That's why such type of the thought and this process, and then it is just become a
फेमस विद द नंबर सिस्टम कि भाई 0 को ये जो 1 से 9 नंबर है उसके साथ कैसे अटैच करें और पूरा ये डेसिमल सिस्टम कैसे बना. दिस इज अ वन काइंड ऑफ द थिंग इज देयर फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट कि भाई पूरा नंबर सिस्टम आया कैसा. Okay, so this is the overall stuff regarding the decimal system. Do you know that how binary will came? I have another story for that over here. I'm very much interested to discuss this. How the binary came, 0 and 1. क्यों भाई कंप्यूटर में 0 1 0 1 ही हम कंसीडर करें? सब लोग सुन रहे हैं या फिर ऐसे ही मैं बोले जा रहा हूँ ये सब चीजें और आप सब लोग सो गए हो, खाना खाने में बिजी हो? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. सुन रहे हैं? चलिए अच्छा है. So if I talk about the binary system is come from the scientist or one philosopher named George Boole. George Boole, I have correct my, yes, George Boole is there. From their name, it came as a Boolean algebra. Okay, so what George Boole has said, like they have given the philosophical view, like if there are two positive, then output is going to be positive. If one positive, one negative, then output is going to be negative. If both are negative, output is going to be negative. So वो philosophical statement में से उसने वो 0 और 1 के जो truth table है आप or and not. Likewise, they have given the stuff like which possibilities or not possibilities. Okay, or we can say positive or negative, both positive. Likewise, they have given the philosophy. और वो फिलोसॉफी में से बेसिक गेट निकल के आए एंड और नॉट एंड ऑल दिस स्टफ. फ्रॉम दैट दे हैव एडॉप्टेड दिस थियरी इनटू द कंप्यूटेशन ऑफ द बूलियन अलजेब्रा. लाइक दो ही स्टेट है तो एक स्टेट के लिए 0 रखो, दूसरे के लिए 1 रखो और ये दो नंबर सिस्टम का आप यूज करो. तो इसको किस तरह से हम लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा, बूलियन कैलकुलेशन वी कैन डू, एंड फ्रॉम दैट एंटायर लॉजिक गेट एंड ऑल स्टफ हैज बीन केम. And then you know the rest. Like ये तो philosophical बात है. बाद में जो प्रोसेसर ये सब चीजें आई, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मैंने एनालॉग टू डिजिटल लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था. From the one of the professor from IIT, I have heard this story and it's very inspirational. Like you can say whenever there are stuff which is related to like innovating something. Just a second. Yeah, so we can say like what is a basic thing behind that analog to digital converter. Analog to digital converter, they have given in near about something 1965 or over there. Okay, 1965 में एक साइंटिस्ट है, उसने ये प्रोसेस किया कि भाई इस तरह से आप एक साइड से एनालॉग सिग्नल एंटर करो, दूसरी साइड में ऐसा बुलियन फंक्शन की जैसा 0 1 0 1 आपको मिलता है. एट दैट टाइम पीपल हैज नॉट एक्सेप्टेड. तो ऐसा थोड़ी होता है, ये कहाँ पे यूज होता है, दिस पेपर इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड ऑल दिस स्टफ. आफ्टर 7 to 8 years, ओके, वो बंदा भी एक्सपायर हो गया था. आफ्टर 7 to 8 years they have got the idea that this is actually the main building block of any computers. कि आप इनपुट तो एनालॉग में दे रहे हो, but when it is going to be the output processing in a digital, so we require to make a such type of the block. और लोगों ने वो block बनाया और बाद में they have appreciated like this is effort has been given by this person before 7 to 8 years. और उसका जो innovation था is going to be applicable to the entire world after the 8 years. So 8 years के बाद जब लोगों को पता चला कि पहले तो हम वैक्यूम ट्यूब पे ही काम करते थे, like we are having a vacuum tube, big radio, big size of the radio. उसमें ऐसा डिजिटल नहीं था. जो भी स्टोरेज, जो भी वेव्स, जो भी कुछ स्टोर होता, it's totally stored in a vacuum tube. But once this process of converting such type of the digital to analog and transistor innovation has been done, then this entire process will come to the okay. So there is a little bit of distraction from my home, but it's okay. Yes. So this is overall stuff. Like वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बना, ट्रांजिस्टर का भी इनोवेशन हुआ. बाद में that's whatever the computer that we are seeing, which is actually the
that is kind of the available to us. First transistor जो बना, that's it's given by the William Shockley, Walter Brattain, and Jack Kilby. That JK flip flop आप सोच रहे हो ना, JK flip flop, that's Jack Kilby, Walter Brattain, and William Shockley has first invented the transistor. उस टाइम वो ट्रांजिस्टर का साइज नियर अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर था. एक ट्रांजिस्टर 6 सेंटीमीटर का था. Right now, in 1 millimeter, you are incorporating billions of transistors. Okay, so from that discovery to nowadays, that much of the revolution is there, and no doubt they have got the Nobel Prize for this discovery also. So this is the overall stuff we have, and in regarding the history and all particular stuff, number system and all things. So I hope that you have enjoyed this stuff, like this number system and all this stuff. अभी भी अफ्रीका में कुछ ऐसी टेरिटरी है जहां पे लोगों को 10 या 12-20 नंबर से ज्यादा वो लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते. लाइक 1 नंबर इट मींस 1 फिंगर, लाइकवाइज 10 नंबर्स इट मींस 10 फिंगर्स. उसके बाद अगर उसको 11, 12, 13 बोलना है तो दे आर जस्ट काउंटिंग विद देयर लेग फिंगर्स. तो आप सोच सकते हो 20 के बाद वो कैलकुलेशन वेरी डिफिकल्ट. आप अगर उसको 22 बोलना है तो सब फिंगर्स गिनाओ, बाद में एक दो कान दिखाओ, then they will having a 22 number. So likewise, still there are some territories there in Africa, they don't know the number system yet. So ये सब चीजें भी है अभी हमारे यहाँ पे existing. So that's just the information. Now there is a number system. You all know that already. You have gone through this several system, number system like binary, decimal, octal, hexadecimal, all this stuff. Then this basic logic gate, that all of you know that this basic logic gate will do the different logical operation, ending, oring, not, nor, there are a complementary of or, and then like this stuff. And the truth table also, you very much aware with that, like what is the truth table of the and, what is the truth table of the or, what is the truth table of the nor, XOR, XNOR, NAND, and then all this stuff. Okay, so we have also classified that there are a basic gate, there are a and, or, and not. Then there are universal gate is NAND and NOR, and then there are a special type of the gate with the XOR and XNOR. Can anybody tell me why NAND and NOR known as a universal logic gate? Yes, sir. Because any gates derived from NAND or NOR. Okay, so any gate that you can create from NAND and NOR, that's why they have created that NAND and NOR is going to universal gate logic gate. So ये चीज फैब्रिकेशन टाइम पे भी ये मैटर करती है कि एक्चुअली दे आर जस्ट क्रिएटिंग अ बेसिक लॉजिक गेट व्हिच इज मेड अप फ्रॉम द NAND and NOR. वो पूरी जो अपनी सर्किट होती है, जो भी कुछ चीजें होती है, all this stuff they are going to create it from the NAND and NOR. और NAND and NOR में ही पूरी सर्किट को कन्वर्ट करने के बाद they are just converting all the things into the real one. Like जो भी उसका एडर, सबट्रैक्टर, जो भी सब चीजें हैं, वो बाद में एंड और NAND और NOR गेट से ही बनाते हैं. So they are not creating a AND and OR level architecture, they are creating NAND and NOR level architecture. क्योंकि एक बार NAND का ट्रांजिस्टर बना लिया, NOR के लिए ट्रांजिस्टर की पूरी सर्किट बना ली, बाद में वो सर्किट को आपको रिप्लेस ही करना है. जितने भी आपका लाइक आपको मैंने जो अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोसेसर के अंदर सब ALU होता है, ALU के अंदर लॉजिक गेट होते हैं, और वो लॉजिक गेट अगर आपने NAND और NOR से कन्वर्ट कर दिए तो आपको एक तरह का ही गेट बनाना पड़ेगा. बाद में आपको क्या करना है, जस्ट यू नीड टू डिसाइड द इंटरकनेक्शन. अब ऐसा सोचो कि आपके पास बिलियंस ऑफ आपने गेट बना लिए NOR, अब आपको इंटरकनेक्शन ही करना है टू रियलाइज दैट पर्टिकुलर फंक्शन. सो दैट्स व्हाई this is called as a universal logic gate, because it is easy when we are going to fabricate, when we are going to create a similar type of the floor plan. वो फ्लोर प्लान जो लिथोग्राफी का जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो लिथोग्राफी में ऐसा ही है कि आप NAND गेट का जो लिथोग्राफी होता है वही सेम पैटर्न पूरी चिप पे कर दो, उसके ऊपर बाद में सिर्फ इंटरकनेक्शन का एक मैप बना दो, तो पूरा प्रोसेसर और पूरी सब चीजें है that's going to be created. That's why it's going to be very easy over there. Is it okay with everyone? Any question in this one? So we are going to limit ourselves up to this one. From next lecture, we are going to discuss about the arithmetic and logical operation with the this particular kind of the number codes. Okay, addition, subtraction, multiplication, conversion of the number system, and all stuff that we are going to discuss in the next lecture. Anybody having any doubt, any question? जो लोग
बाद में ज्वाइन हुए, मैं उसको फिर से बता देना चाहता हूँ, आप सबके मारवाड़ी एजुकेशन वाले लिंक में एक इनविटेशन आया होगा, वो इनविटेशन को एक्सेप्ट करिए। वो कैनवास का इनविटेशन है, जितने भी असाइनमेंट है, जितने भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी कुछ है वो कैनवास में ही सेटअप होगा और उधर से ही आपको सब सबमिट करना है, डाउनलोड करना है। तो आप अपना मारवाड़ी एजुकेशन वाला मेल आईडी चेक करिए। There are 83 students is there and I have sent the mail to all the 83 students. So check their mail ID and you can get the invitation from that. उसको accept करिए, अपना कैनवास सेटअप करिए। अगर कैनवास सेटअप नहीं हुआ, ये जितने भी 66 या 65 लोग अभी है, सर मेरा कैनवास सेटअप नहीं हुआ, तो आप पूरा सब असाइनमेंट है मैं उसको 0 कर दूंगा, क्योंकि 2 वीक मैक्सिमम टाइम होता है कैनवास सेटअप करने के लिए। अगर नहीं हुआ है तो उसका रिजोल्व करने के लिए। एट द एंड अगर ये 65 में से कोई बंदा मेरे को बोलेगा सर मेरा कैनवास सेटअप नहीं हुआ है एट द एंड सेमेस्टर, देन यू स्ट्रिक्टली गेट द 0. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द एनी मार्क बिकॉज यू हैव नॉट स्टार्टेड सेट अप योर कैनवास फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर. सो प्लीज वो लिंक एक्सेप्ट करिए, आ गया होगा। अगर आप डायरेक्टली कैनवास यूज करते हो तो कैनवास में लॉगिन हो जाइए, वहां पे भी आपको एक टैब मिलेगा जिसको आप एक्सेप्ट करके आप कोर्स में एनरोल हो सकते हो. सो प्लीज डू दैट एज सून एज पॉसिबल. अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है फिर भी आपको एक एक्सेप्टेशन करना है, वो EC2 करके आएगा. EC2 में आपको एक ग्रुप में ऐड किया है. तो सब लोग जिसका कैनवास सेटअप हुआ है नहीं हुआ है जो भी है, कैनवास में जाके एक्सेप्ट करिए, एक नोटिफिकेशन आया होगा तो आप एक ग्रुप में एनरोल हो जाओगे. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेश्चन नाउ? If you have not any doubt, any question now, so please write the summary of the discussion. Yes, Mihir, बताइए क्या? No, sir, no question. Okay, good one. So please write your enrollment number and name and summary, then you can leave the class. Wait for the next lecture if you have.